So today we will take up the topic state space realization of transfer function. Okay. So what is the statement of this problem? Given the transfer function of a linear time invariant system, okay, given the transfer function of a linear time invariant system, obtain its state space मॉडल. अगर किसी सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन दी हुई है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट स्पेस मॉडल ऑब्टेन करो ट्रांसफर फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग. Now the question arises, since there can be infinite state space models corresponding to a given transfer function, so what type of state space model shall we go for? Okay, the question arises, that since there can be infinite state space models corresponding to a given transfer function, since there can be infinite state space models corresponding to a given transfer function, which state space model shall we go for? Okay. Yes, sir. Now, the answer to this question is that we would like to have that state space realization which is mathematically convenient to handle. Okay. The answer to this question is that we would like to go for those state space models which are mathematically convenient to handle. हम ऐसे स्टेट स्पेस मॉडल्स चाहेंगे जिनमें कि जो मैट्रिसेस हैं सिस्टम मैट्रिसेस वो उस फॉर्म में मैं हूँ जिनको हम जो कि मैथमेटिकली कन्वीनियंट हो टू वर्क विद. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक डायगोनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. ओके, जैसे एक एग्जांपल है ऐसे स्टेट स्पेस मॉडल्स की जो कि मैथमेटिकली कन्वीनियंट है टू वर्क विद, that is diagonal form representation. That's where the system matrix A is in diagonal form. Similarly, there can be many other what you call mathematically convenient representations of state space models. Are you getting me? So the problem that we are tackling here is that if we are given a transfer function of a system and we are asked to obtain its state space model, so now as we have already discussed that there can be infinite state space models corresponding to a given transfer function. Now the next question that arises is what type of state space model should we go for? And immediately I have given the answer that we would like to go for those state space models which are mathematically convenient to handle, like diagonal form representation, and similarly some other representations. Such mathematically convenient
to work with such mathematically convenient to work with state space models are known as canonical state space models or canonical state space realizations. We call them canonical state space realizations. The word canonical in English language means special. Okay, so we will try to derive those state space models corresponding to a given transfer function in which the system matrices have a special structure. Such models are known as canonical state space models, and we will try to derive those state space models for systems. Are you getting me? Yes, sir. Now, next point is, why do I call it realization? Why do I use the word realization? State space realization of transfer function. Basically, obtaining the state space model corresponding to a given transfer function is known as its realization. We call it as the realization of a given transfer function in state space form. Why it is known as realization? The answer to this question will come in a short while. Okay, so we'll keep it pending. Why do we call it realization? Okay. Now the next point, in fact the point that should have come in the beginning, was that if we have been given a transfer function of a system, why do we want to obtain its state space model? क्या रीज़न है कि हम इसका, अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी पता है तो ट्रांसफर फंक्शन को तो हम सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग इट्स स्टेट स्पेस मॉडल. So why do we want to obtain the state space model corresponding to a given transfer function? The reason is that there are many design techniques, controller design techniques, which are based on state space models. So even if the system model is given in transfer function, we would like to convert it into an equivalent state space model so as to apply those controller design techniques in order to design controllers for systems. That's one reason. I'll write it. First listen to me. Second reason is that computer simulations of systems are mostly based upon matrix format. That's the state space models of systems. So that's why when we have to go for simulations of systems, computer-based simulations of systems, if the system is given in transfer function form, we would like to have it in state space format. Is that clear? Yes, so there are two main reasons as to why we go for state space realization of a transfer function. First reason is there are many controller design techniques for state space models. Okay, there are many controller design techniques for state space models. That's why if we know the transfer function of a system, in order to apply those controller design techniques to design controllers for systems, we first of all convert them into state space models. Enough? That's one reason. Second reason is that most of the computer-based simulation algorithms are based on differential equation structure
oblique state space models. Most of the computer-based simulation algorithms are based on differential equation structure oblique state space models. That's why these are the two main reasons as to why we go for state space realizations of transfer functions. Are you getting me? Yes, sir. Now we will come to the actual problem. That means if we have been given the transfer function of a system, we have to obtain its state space realization. और हम तीन main canonical structures class में discuss करेंगे. Because now, as I have already told you, that there can be infinite state space equivalents of a transfer function, but we would like to go for those state space models which are in mathematically convenient form. तो हम तीन models ऐसे discuss करेंगे class में. किसी भी given transfer function के corresponding, we will have three canonical state space realizations. So अभी एक प्रॉब्लम रहता है कि इसको रियलाइजेशन क्यों कहते हैं ना, वो हम देखेंगे बाद में. So we will discuss canonical state space realizations. State space realizations. Okay. तो ऐसा जैसे मैंने अभी कहा कि तीन ऐसे रियलाइजेशंस हम स्टडी करेंगे. वन इज व्हाट इज नोन एज फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म. फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म और इसका दूसरा नाम कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है. Okay, this is the first canonical state space realization we'll discuss. Second is known as second companion form. Or this is also known as, another name for this is observable canonical form. Got it? ये दूसरा canonical state space realization हम discuss करेंगे. And third is what's known as Jordan's canonical form. Okay. So these three state space realizations we'll be discussing in the class. We'll take them one by one. पहले हम लेंगे कौन सा? फर्स्ट. इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म क्यों कहते हैं उसका भी रीजन है. दैट विल कम once we'll discuss it. Okay. So we'll have to discuss, this is what is main, इस टॉपिक में मेन ये तीन चीजें डिस्कस होंगी. तो हम एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करेंगे. So first canonical state realization that's be taken is first companion form, है ना? First companion form. Consider a general nth order LTI system described by the following transfer function. Okay, GS is equal to beta naught s to the power m plus beta 1 s to the power m minus 1 plus beta 2 s to the power m minus 2 plus so on, beta m minus 1 s plus beta m upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus alpha 2 s to the power n minus 2 plus so on, alpha n minus 1 s plus alpha n. ये मैंने एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर की. ओके. वो ट्रांसफर फंक्शन
ऐसी कंसिडर करनी है जो कि प्रॉपर हो, मींस जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का डिग्री है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल डिग्री. M should be less than or equal to n. M cannot be greater than n. Are you getting me? So M can be at the most equal to n. Normally it should be less than or equal to n. Okay. We will consider the case where M is equal to n. हम वो वाला केस कंसिडर करेंगे जिसमें m n के बराबर हो. फिर अगर m n से कम भी होगा, even if m is less than n, those terms will not come in the numerator. तो हम एक जनरल केस के लिए डिराइव करेंगे स्टेट स्पेस मॉडल, और फिर उसी से हम ऐसे मॉडल का ट्रांसफर फंक्शन भी ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें कि m स्ट्रिक्टली लेस देन n हो. ओके, तो हम एक ऐसा केस कंसिडर करेंगे जिसमें m n के बराबर है. तो मैं अगर इसको रीराइट करूं, अगर m n के बराबर है तो न्यूमरेटर में मैं m की जगह n लिख सकता हूं. तो दैट इज बीटा नॉट s टू द पावर n, बीटा 1 s टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा 2 s टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन बीटा n माइनस 1 s प्लस बीटा n, है ना, अपॉन s टू द पावर n प्लस अल्फा 1 s टू द पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा 2 s टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन अल्फा n माइनस 1 s प्लस अल्फा n. सही है. Note down the structure of the denominator polynomial. As you can see here, नहीं, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, मतलब ये वाली टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है दैट्स 1, है ना. ऐसे फॉर्म में ही आपको ट्रांसफर फंक्शन लानी है. इवन इफ इट्स नॉट 1, you should divide numerator and denominator by its coefficient so that this comes out to be 1. हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं. मोनिक, MONIC. Note down the structure of the denominator polynomial. The coefficient of its highest degree term that is s to the power n. Highest degree term s to the power n, that is s to the power n, which is known as the leading coefficient of this polynomial, which is known as the leading coefficient of a polynomial. The coefficient of its highest degree term, that is s to the power n. इस कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं पॉलिनोमियल का, एंड दिस इज 1. द कोफिशिएंट ऑफ इट्स हायर डिग्री टर्म दैट s to the power n is 1, है ना. Such a polynomial is known as Munich polynomial. Okay. Even if the given transfer function does not have the denominator polynomial as a monic polynomial, you should convert it into a monic polynomial by dividing the numerator and the denominator polynomial by the leading coefficient of the denominator polynomial. मतलब कुछ ऐसा अगर हो, if you have something like this, s plus 1 upon 2s square plus 3s plus 1, 2 से करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड ताकि ये 1 आ जाए यहाँ पे. Are you getting me?
So I'll write even if the given transfer function does not have the denominator as a Munich polynomial, okay, it should be converted into a Munich polynomial by dividing the numerator and denominator polynomial by the coefficient of the leading, by the leading coefficient, है ना, by the leading लीडिंग होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको, जैसे इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 था जो मैंने अभी लिखी थी ना ट्रांसफर फंक्शन, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 है डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ओके, बाय द लीडिंग कोफिशिएंट of the denominator polynomial, सही है। Okay, now we have been given a transfer function in we have a transfer function wherein the degree of the numerator polynomial is equal to the degree of the denominator polynomial, and we are deriving a canonical state space realization for this transfer function in first companion form. Okay, it's clear up till now? It's very simple. So we have GS is equal to YS upon US. That is the ratio of the Laplace transform of the output variable to the Laplace transform of the input variable. That is equal to beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus beta 2 s to the power n minus 2 plus so on beta n minus 1 s plus beta n, सही है, upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 alpha 2 s to the power, हाँ m कहाँ है, वो तो हमने लिया ना m इक्वल टू n, अल्फा n माइनस 1 s प्लस अल्फा n, m को हमने लिया ना जनरल केस में n के बराबर, है ना। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ब्लॉक फॉर्म में, दिस इज us and this is ys and this is this transfer function beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus so on beta n minus 1 s plus beta n, सही है, upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on alpha n minus 1 s plus n, ठीक है। ये जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन की यहाँ पे, ये इसी का ब्लॉक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अगेन आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, this is us, this is ys, so I show it like this, 1 upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n, okay,
then in this block beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus so on beta n minus 1 s plus beta n. ये जो सिंगल ब्लॉक था इसको मैंने दो ब्लॉक्स में बाइफरकेट कर दिया. Since you know that when two blocks are in cascade, the overall transfer function is the product of these two transfer functions. So again this will come out to be this. Okay? Yes, sir. तो ये जो intermediate signal बनी यहाँ पे I call it ZS. What do I call it? ZS. Now I consider this part first. मैं पहले ये वाला हिस्सा consider कर रहा हूँ. So consider ZS upon US. Okay? Is equal to 1 upon s to the power n plus alpha 1 s to the power n minus 1 plus alpha 2 s to the power n minus 2 plus so on alpha n minus 1 s plus alpha n. सही है? Or I can write it as I cross multiply I get s to the power n zs plus alpha 1 s to the power n minus 1 zs है ना, alpha 2 s to the power n minus 2 zs plus so on alpha n minus 1 s zs. सही है? plus alpha n zs is equal to u of s. Okay? Transforming this equation to time domain, we have, you know that when we go from differential equation to Laplace, तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंशियल टर्म आती है जैसे d by dt वो s में कन्वर्ट हो जाता है. हाँ, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन की तरफ तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंशियल टर्म होती है जैसे मान लो d by dt है उसकी जगह आएगा s. अगर d स्क्वायर t by dt स्क्वायर है तो s स्क्वायर आएगा. तो अगर हम रिवर्स में जाएं d by dt s की जगह dn t by dtn है ना, तो उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. So transforming this equation to time domain we can write it as dn, where d is the differential operator. Okay, dn और ये भी टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा. This will become zt. Note down, this is capital Z, this is small z. Okay, plus alpha 1 d to the power n minus 1 again zt. सही है? plus alpha 2 d to the power n minus 2 zt. ठीक है ना? plus so on plus dn minus 1 ये वाली टर्म नहीं अल्फा n minus 1 सॉरी अल्फा n minus 1 d zt plus अल्फा n zt. सही लिखा हमने? इज इक्वल टू ut. ठीक है ना? वेयर d is equal to d by dt operator. ओके, मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना कभी. ठीक है? Remember that we are trying to obtain the first companion form realization corresponding to a given transfer function, and I am telling the steps for doing that. So now this ये जो मेरी इक्वेशन मुझे मिली यहाँ पे, I can write it as, मैं ये dnzt एक साइड से रख रहा हूँ ऐसे, और बाकी सारी टर्म्स में वहां से शिफ्ट कर रहा हूँ. ओके, so this will be equal to minus alpha 1 d to the power n minus 1 zt. सही है? minus alpha 2 d to the power n minus 2 zt
ठीक है ना, माइनस सो ऑन माइनस अल्फा एन माइनस वन डी जेड टी माइनस अल्फा एन जेड टी प्लस यू टी। नहीं निकालना है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको स्टेप्स जो आपको यूज करने हैं इन ऑर्डर टू गेट इट इन फर्स्ट कंबाइंड फॉर्म रियलाइजेशन. So we have to represent it like this. We have to express d and zt as the sum of other terms. So d and zt we keep on one side and the other terms we keep on the other side. Are you getting me? Yes, sir. Now after that, we represent this equation by means of a what we call a state diagram. What is a state diagram? State diagram is the diagrammatic representation of this equation, overall equation. Okay, so how do we draw the state diagram corresponding to this? What is the procedure? The procedure is we for an this is an nth degree की equation है ना, ये d to the power n है ना इसमें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं we make a chain of n integrators like this. This is 1, this is 2, so on like this. This is another one. This is another one. We make a chain of n integrators. We represent it like this. Integrator we represent like this. Okay. So what we are trying to learn is we are trying to obtain a state diagram corresponding to this given equation. In order to convert it into a state diagram, we are making a chain of n integrators. How many integrators are here? These are n integrators. How many? तो जितना ऑर्डर होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने इंटीग्रेटर्स बनाने हैं. The output of the last integrator we call it zt. What do we call it? The output of the last integrator in this chain we call it zt. So if it is zt, then this one will be dzt, because when it is integrated you get zt. And if it is dzt, this is d square zt. So yeah. Now going on this side, if this is dn minus 1 zt, this will be dn zt, and this must be dn minus 2 zt. सही है. मैं इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ये वाले वेरिएबल्स बनाए इसमें, ये जो डी एन जेड टी है, डी एन माइनस 1 जेड टी, डी एन माइनस 2 जेड टी, डी जेड टी, जेड टी. सही है ना. नाउ यू नो दैट डी एन माइनस 1 जेड टी, दिस इज इक्वल टू ऑल दीज टर्म्स एडेड अप, है ना, प्लस यू टी. ut is the input. So I showed something like this. This is ut, this is plus. Okay. अब देखो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में डी एन जेड टी है और राइट हैंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स प्लस यूटी. तो यूटी तो मैंने बनाया यहां पे. सो डी एन जेड टी इज इक्वल टू एक तो यूटी प्लस सम अदर थिंग्स, इजंट इट. नाउ you can see here, ये जो zt है, it's multiplied by what? Alpha n. Alpha n. And dzt is multiplied by what? Alpha n minus 1. Isn't it? So I write something like this. This is alpha 1. This is alpha 2. सही है. ठीक है ना. डी स्क्वायर जेड टी के
जैसे इसके साथ अल्फा 1 है, इसके पास अल्फा 2 है, सॉरी 1 मिनट, नहीं गलत लिखा, ZT के साथ में प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा n, इट शुड नॉट बी अल्फा 1, इजंट इट? इट शुड बी अल्फा n, इट शुड बी अल्फा n माइनस 1। इससे पहले वाली जो टर्म होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, उसके साथ अल्फा n माइनस 2 होगा ना? सही है। dn माइनस 2 Z2 के साथ अल्फा 2 है, सही लिखा हमने। dn माइनस 1 ZT के साथ अल्फा 1 है, सही है ना? तो यहां वाली सिग्नल जो है, दिस इज नाउ अल्फा n ZT, दिस इज अल्फा n माइनस 1 D ZT, दिस इज अल्फा n माइनस 2 D स्क्वायर ZT। यहां वाली सिग्नल इज अल्फा 2 dn माइनस 2 ZT, अल्फा 1 dn माइनस 1 ZT, बट ऑल दीज टर्म्स आर टू बी एडेड अप एंड माइंड इट, इन सभी के साथ माइनस साइन है। पहले मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करूंगा। कैसे करेंगे ऐड? यहां पे एक एडिंग समिंग ब्लॉक लगाएंगे, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, ओके। यहां पे एक और समिंग ब्लॉक लगाएंगे, दिस विल गेट एडेड लाइक दिस। यहां पे बीच में भी बहुत सारे समिंग ब्लॉक्स होंगे, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, क्योंकि ये वाली बीच वाली टर्म्स हम नहीं ना लिख रहे हैं, है ना? इसी तरीके से यहां पे भी आपके पास एक समिंग ब्लॉक होगा लाइक दिस, यहां पे भी दो टर्म्स ऐड हुई, इजंट इट? तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये एड अप हो जाएंगी एंड देन we'll take them here and put a minus sign here. So d and zt will be ut, वाली term ut minus times sum of all these terms, means दूसरे लफ्जों में ये माइनस अगर मैं कॉमन निकालूं यहाँ पे, तो अंदर रहेगा अल्फा 1 dn माइनस 1 zt प्लस अल्फा 2 dn माइनस 2 zt, वो सारी टर्म्स मैंने एड अप कर ली, and that the sum of all these terms plus ut comes out to be this. Do you get me? समझ आया? तो अगर आप देखो, ये जो मैंने ये डायग्राम बनाई विच इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट डायग्राम, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एनालॉग कंप्यूटर सिमुलेशन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनालॉग कंप्यूटर सिमुलेशन डायग्राम। क्यों कहते हैं इसको एनालॉग कंप्यूटर सिमुलेशन डायग्राम? क्योंकि अगर आप देखो इसमें, इस डायग्राम में, इसमें तीन किस्मों के ब्लॉक्स हैं। There are three types of blocks in this. One is this integrator block. Second is this gain block, simple gain block. And third is this summation blocks. There are three types of blocks in this diagram: integrator block, gain block, and summation block. And mind it, all these blocks can be obtained by means of an op-amp circuit. ऑपरेशन एम्पलीफायर्स पढ़े ना आपने फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर्स को एज गेन ब्लॉक्स कैसे यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स को एज इंटीग्रेटर्स कैसे यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन ब्लॉक्स को एज एडिंग ब्लॉक्स कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा अगर आप चाहो तो लैब में जाके ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट्स उठा के आप इस इक्वेशन, ये जो आपने डायग्राम बनाई, इसका आप मॉडल एक्चुअली बना सकते हो लैब में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रियलाइजेशन, जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना, realization of a transfer function. Realization means that you can actually physically realize it in the lab. Are you getting me? And why do we call it analog computer simulation diagram? Because this can actually be, you can go to the lab and as I've told you just now, you can realize it through operation amplifiers. तो आप इस सर्किट को जाके इसको एक सर्किट फॉर्म में सिमुलेट कर सकते हो, which is known as the analog. It is not a digital simulation. It is an analog simulation because you are using analog components for it. So this complete simulation, this complete state diagram can be realized by means of op-amp circuits, operation amplifier circuits. Are you getting me? That's why this is known as a state diagram or analog computer simulation diagram.
सही है। लेकिन अभी ये जो हमने डायग्राम बनाई है अभी ये आधी ही है। माइंड इट, जो हमने स्टार्ट में ब्लॉक डायग्राम बनाया था ये उसका आधा ही हिस्सा है अभी, है ना। अभी वो बाकी वाला हिस्सा अभी हमने कंसिडर ही नहीं किया। अभी हम पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। दिस स्टेट डायग्राम इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन विच इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। अभी हमें इसमें y तो आया ही नहीं, अभी u आ गया इसमें लेकिन y अभी नहीं आया, isn't it? So keeping it aside, so do you understand why this is known as this is known as realization problem? Because you can physically realize it in the lab by using operation amplifier circuits. Is that clear? Now we will consider बाकी हिस्सा क्या था ब्लॉक डायग्राम का? You had ys is equal to beta naught s to the power n plus beta 1 s to the power n minus 1 plus so on beta n minus 1 s plus beta n into zs। वो देखो आप ब्लॉक डायग्राम पे जाओ, फिर से आप ब्लॉक डायग्राम का दूसरा हिस्सा, हाँ उसके इनपुट में zs है ना और उसके आउटपुट में ys है, तो ys इज इक्वल टू दिस थिंग इनटू zs। सही है। इस इक्वेशन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टाइम डोमेन में, ट्रांसफॉर्मिंग दिस इक्वेशन टू टाइम डोमेन we have what yt, सही है, इज इक्वल टू बीटा नॉट डी टू द पावर n zt, ठीक है ना, प्लस बीटा 1 डी टू द पावर n माइनस 1 zt। ये कितना बड़ा बन गया लेक्चर? कितना ये होगा, स्पेस कितनी होगी इसमें? चलेगा भैया 2.5 व्हाट जीबी प्लस सो ऑन बीटा n माइनस 1 डी zt प्लस बीटा n zt। सही है ना। तो अब हम ये वाली आउटपुट इक्वेशन इस स्टेट डायग्राम में घुसाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये वाली जो आउटपुट इक्वेशन है इसमें ये एडअप करेंगे, तब ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा। अभी ये पार्शियल ही है, अभी ये पार्शियल स्टेट डायग्राम है, अभी हाफ ही है, अभी इसमें आउटपुट वाला टर्म आया नहीं। अब इसमें आउटपुट वाली टर्म भी एंटर करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सी हाउ। व्हाट इज yt इक्वल टू? yt इज द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। नाउ सी हियर, zt के साथ कौन सी टर्म है? बीटा n। तो मैं यहां से एक और ब्लॉक बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा बीटा n। सही है। dzt के साथ कौन सी टर्म है? बीटा n माइनस 1। dzt यहां पे है ना, दिस इज बीटा n माइनस 1। सही है, ये ऐसे हो गया। इसी तरह डी स्क्वायर zt के साथ बीटा n माइनस 2 होगा, बीटा n माइनस 2 होगा इसके साथ, एंड वी गो ऑन लाइक दिस। इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे, है ना। डी एन माइनस 2 के साथ, डी एन माइनस 1 के साथ क्या है? बीटा 1, है ना। डी एन माइनस 2 के साथ बीटा 2 होगा। सही है। डी एन माइनस 1 के साथ बीटा 1 है, लाइक दिस। और डी एन के साथ क्या है? बीटा नॉट, लाइक दिस। सही है भाई। नाउ ऑल दीज टर्म्स आर टू बी एडेड अप, ठीक है ना। तो समिंग ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। यहां पे एक समिंग ब्लॉक और ये गया यहां से प्लस एंड प्लस, ये दो ऐड हो गए। यहां पे एक और समिंग ब्लॉक, ये आगे लेके यहां पे प्लस बन गया। इसी तरीके से यहां पे बहुत सारे समिंग ब्लॉक्स बीच में भी आएंगे, है ना। इसको भी यहां से एक ये आएगा प्लस एंड प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी समिंग ब्लॉक एक आएगा, ये हो गया प्लस यहाँ पे।
यहाँ पे भी एक और समिंग ब्लॉक आ जाएगा, ये हो गया प्लस यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे, है ना। ठीक है, और ये हो गया आउटपुट आपका वाई, समझ आया। तो ये सारी टर्म्स एडअप हो गई और आपका आउटपुट वाई आ गया। ये बन गई अब कंप्लीट स्टेट डायग्राम ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। समझ आ गया, दिस बिकम्स द कंप्लीट स्टेट डायग्राम, क्योंकि इसमें उस ट्रांसफर फंक्शन की सभी इंफॉर्मेशन आ गई। अब we have represented it through a chain of n integrators and then added up the other signals, other coefficients, and this is what we have ended up with. समझ आया। मेरा मकसद एक्चुअली क्या था कि मेरे को जो ट्रांसफर फंक्शन दी हुई है उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेट स्पेस मॉडल में। अभी तो वो प्रॉब्लम अधूरी है ना, अभी तो मैंने इसका सिमुलेशन डायग्राम बनाया, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टेट डायग्राम में। किसमें करना, सॉरी स्टेट मॉडल में, स्टेट स्पेस मॉडल ऑब्टेन करना है। तो स्टेट स्पेस मॉडल कैसे करेंगे ऑब्टेन इसका, लेट्स सी। उसके लिए एक सिंपल रूल याद रखना है, that the output of the integrators has to be chosen as this. The output, the rule that you have to remember for representing it in the form of a state model is that the output of the integrators has to be chosen as the state. The output of the integrators are to be chosen as the state variables. Outputs of integrators to be chosen as state variables. Outputs of integrators to be chosen as, इसमें कितने इंटीग्रेटर्स हैं, नहीं कितने, how many, n integrators. So how many state variables will be there, n state variables. And how do you name them, you'll have to start naming them by moving from right towards left. मतलब जो राइट मोस्ट इंटीग्रेटर है उसके आउटपुट को x1 नाम देंगे, मींस दिस विल कॉल एज x1, इस इंटीग्रेटर का आउटपुट। ये वाले इंटीग्रेटर का आउटपुट दिस विल कॉल एज x2। आर यू गेटिंग मी। इससे पहले वाला इंटीग्रेटर होगा ना यहाँ पे भी, उसके आउटपुट को हम x3 बोलेंगे। समझ आया, ओके। सो सिमिलरली ये वाले इंटीग्रेटर का आउटपुट दिस विल बिकम xn, xn बनेगा ना ये वाला, इस वाले इंटीग्रेटर का आउटपुट, कि nth इंटीग्रेटर है ना ये, nth नहीं इंटीग्रेटर की बात मैं कर रहा हूँ, इंटीग्रेटर ये है ना। Outputs of the integrators are to be chosen as the state variables. This is the nth integrator, एक से लेके आप n तक गए, तो इस इंटीग्रेटर का आउटपुट विल बी xn, x ऐसे लिखेंगे, समझ आया। और इससे पहले वाले इंटीग्रेटर का आउटपुट दैट विल बी xn माइनस 1, सही है, ठीक है ना। So we'll have n state variables. I have told you a simple rule for naming, for assigning the state variables. The outputs of the integrators are to be chosen as the state variables, and in order to get the state space model in first companion form, you will have to start naming the state variables from right towards left. Are you getting me? अब हम लिखते हैं ये equations in terms of x. देखो अब, what is zt? x1. dzt is x2. That means x1 dot is x2, है ना, x1 dot is x2. तो पहली इक्वेशन जो बनेगी, ये x1 है ना यहाँ पे, इसके इनपुट पे x1 डॉट होगा ना। सो इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन इज x1 डॉट इज इक्वल टू x2, सही है। दिस विल कॉल इज इक्वेशन नंबर 1. डू यू अंडरस्टैंड? Like this is zt, this is d of zt. Zt we have called as x1 and d of zt we have called as x2. D of zt means d of x1, that is x1 dot. So x1 dot is x2. Similarly here, x1 dot is actually x2 dot. Yeah, na, basically d square zt is d of dzt. Dzt is x2. So second equation is x2 dot equal to x3. सही है? This is equation 2. Similarly, if you move on this side, you will get the equations of the same form. Up till what?
up till xn minus 1 you will have, so if you go on writing the equations like this ठीक है, कंटिन्यू करोगे आप इक्वेशंस लिखना, यू विल गेट x of n minus 1 dot is equal to x of n. खाली x n डॉट वाली इक्वेशन डिफरेंट होगी, ये वाला आपका x n है, ये वाला जो है दिस इज x n डॉट, है ना, ये वाला वेरिएबल x n डॉट है ना, क्योंकि इसके आउटपुट पे x n है, बीच में इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पे x n डॉट होगा, so it will be x n dot की इक्वेशन, let's see x n dot की इक्वेशन will be, that means this variable, this is the sum of all these variables. तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा अल्फा एन एक्स वन, लेकिन आगे माइनस साइन भी है, सो माइनस अल्फा एन एक्स वन, माइनस अल्फा एन एक्स वन, इसी तरीके से माइनस अल्फा एन माइनस वन एक्स टू, माइनस अल्फा एन माइनस वन एक्स टू, सही है, माइनस अल्फा एन माइनस टू एक्स थ्री, अल्फा एन माइनस टू एक्स थ्री, और इसी तरीके से आगे जा रहे हैं हम, माइनस अल्फा टू एक्स एन माइनस वन, सो ऑन करके माइनस माइनस नहीं, वहां तक अभी बीच में और टर्म्स लिखेंगे, अल्फा टू एक्स ऑफ एन माइनस वन, सही है, माइनस अल्फा वन एक्स एन, माइनस अल्फा वन एक्स एन, कहीं पे भी डाउट हो जाए मुझे बताओ, प्लस यूटी, यूटी भी है ना, प्लस यू, या यूटी लिखो, यू लिखो, प्लस यूटी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, ऐसी कितनी इक्वेशंस मिलेंगी मुझे, ये टोटल n इक्वेशंस है ना, क्योंकि 1 से लेके n तक गया ना ये, आई विल गेट अ टोटल ऑफ n इक्वेशंस, आर यू गेटिंग मी, सो दीज n इक्वेशंस आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट स्पेस मॉडल, ओके, let me write these n equations in the form of a state space model, let me write, ये मैं रब कर देता हूं यहां पे, so I have got x1 dot x2 dot, है ना, so on xn minus 1 dot और xn dot is equal to, सही है, ये लंबा सा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 so on xn minus 1 और xn, ठीक है, what is x1 dot equal to, x1 dot is x2, मीन्स खाली x2 वाली टर्म आ रही है उसमें, बाकी सारे जीरोस आएंगे, x2 टर्म की जगह 1 आएगा, लाइक दिस 0 1 0 और सारे जीरोस, है ना, व्हाट इज x2 डॉट इक्वल टू x3, तो इसका मतलब है 0 0 और x3 की जगह 1 और बाकी सारे जीरो, इसी तरीके से हम जा रहे हैं आगे, ऐसे ऐसे, है ना, अब xn माइनस 1 डॉट इज इक्वल टू xn, मीन्स लास्ट वाली टर्म 1 0 0 0 सो ऑन ऐसे 1, है ना, एंड xn डॉट इज इक्वल टू व्हाट, xn डॉट इज माइनस अल्फा एन x1, मीन्स यहाँ पे माइनस अल्फा एन, है ना, फिर माइनस अल्फा एन माइनस 1 x2, मीन्स यहाँ पे माइनस अल्फा एन माइनस 1, माइनस अल्फा एन माइनस 2 x3, है ना, इसको हम सो ऑन लिखेंगे ऐसे, फिर लास्ट वाली टर्म जो है, एक तो माइनस अल्फा टू एक्स एन माइनस 1 है और माइनस अल्फा 1 है, तो ऐसे लिखेंगे माइनस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 1, सही है, यूटी भी है ना, वो भी लिखेंगे ना अभी, वो प्लस में आएगा, हाँ, यहाँ पे माइनस अल्फा 1 है ना, प्लस आगे वाली में किसी में भी यू नहीं है, सारी टर्म 0 और लास्ट वाली टर्म 1 और यू लिखो, यूटी लिखो, एक ही बात, समझ आए, तो आप देखो इसमें ये बन गया स्टेट स्पेस मॉडल आपका सिस्टम का, स्टेट इक्वेशन अभी है, अभी आउटपुट इक्वेशन नहीं ना आई, अभी हमें आउटपुट इक्वेशन भी बनानी है, तो ये हमें स्टेट स्पेस मॉडल बना सिस्टम का, इसमें अगर आप देखोगे
So this is basically in the same form, x dot equal to ax plus bu, है ना? सही है ना? इसमें a वाला मैट्रिक्स जो है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है. स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है उसमें? पहले तो मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स इसमें जीरो हैं. मोस्ट ऑफ द टर्म्स आर जीरो. देयर इज वन ऑन द सुपर डायगोनल. दिस इज द मेन डायगोनल. एक्चुअली ये वाला डायगोनल मेन डायगोनल हुआ. इसके ऊपर वाला जो डायगोनल है उसको सुपर डायगोनल कहते हैं. इसके नीचे वाला जो डायगोनल उसको सब डायगोनल कहते हैं. तो इसमें एक तो मैक्सिमम टर्म जीरो है, सुपर डायगोनल पे वन है, और खाली लास्ट वाले रो में नॉन जीरो एंट्रीज हैं, है ना? खाली लास्ट वाले रो में नॉन जीरो एंट्रीज हैं. और अगर आप देखो ये लास्ट वाले रो में जो एंट्रीज हैं, इफ यू रेफर टू द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, आप देखो ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने स्टार्ट में लिखा था, उसके जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट्स जो हैं अल्फा 1, अल्फा 2 सो ऑन अप टू अल्फा n, वही आए यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, रिवर्स ऑर्डर में. उसमें था ना अल्फा 1 आगे, इसमें अल्फा 1 एंड में आ गया. रिवर्स ऑर्डर में ये कोफिशिएंट्स आ गए विद नेगेटिव साइन. दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स इन, इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स थ्योरी में इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? दिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज द फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रियलाइजेशन इज नोन एज फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म रियलाइजेशन. तो फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? उसमें सुपर डायगोनल पे वन होता है और लास्ट वाले रो में नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, बाकी सारी एंट्री जीरो होती हैं. और बी का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इसमें, बी वाले मैट्रिक्स का सारी एंट्रीज जीरो एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज यूनिटी. एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज यूनिटी. आर यू गेटिंग मी? So that's it. That's why this is known as the first companion form realization. अब ये स्टेट इक्वेशन ही है खाली, अभी मुझे इसकी आउटपुट इक्वेशन भी लिखनी है. अभी आउटपुट इक्वेशन इसमें नहीं ना आई. Now I will write down the output equation. Let's see what does the output equation look like. Let me write down the equation for the output. So yt is equal to yt is, देखो आप, बीटा एन x1 है ना, बीटा एन x1 सही है, प्लस बीटा एन माइनस 1 x2. यहां पे देखो, प्लस बीटा एन माइनस 2 x3 सही है, प्लस सो ऑन बीटा 2 x ऑफ n माइनस 1 है ना यहाँ पे, प्लस बीटा 1 xn सही है ना, प्लस बीटा नॉट xn डॉट, बीटा नॉट xn डॉट. लेकिन xn डॉट कभी भी नहीं आना चाहिए इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में. xn डॉट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सिस. हाउ? नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे. yt इज इक्वल टू, इनको मैं ऐसे ही रखूंगा, बीटा एन x1 प्लस बीटा एन माइनस 1 x2 प्लस बीटा एन माइनस 2 x3 प्लस सो ऑन बीटा 2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस बीटा 1 xn सही है, प्लस बीटा नॉट. अब xn डॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा? यू नो दैट दिस xn डॉट, दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स, है ना. तो बीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस अल्फा एन x1 माइनस अल्फा एन माइनस 1 x2 सही है भाई, माइनस अल्फा एन माइनस 2 x3 ठीक है ना, माइनस सो ऑन माइनस अल्फा 2 x ऑफ n माइनस 1 ठीक लिखा मैंने, देन माइनस अल्फा 1 xn
माइनस अल्फा 1 एक्स एन प्लस यू टी प्लस यू। आर यू फॉलोइंग मी? ये मैंने एक्स एन डॉट की जगह एक्स एन डॉट की इक्वेशन लिखी। अब क्योंकि x1 की यहां पर भी टर्म है, यहां पर भी टर्म है ना? आप देखो यहां पे भी x1 की टर्म है, यहां पे भी x1 की टर्म है, इनको कंबाइन करेंगे। आई थिंक आई कैन नाउ रब द डायग्राम, है ना? सही है? So you have got yt equal to, now let's combine the terms. So you have got beta n minus alpha n beta naught x1, beta n minus alpha n beta naught x1 plus beta n minus 1 minus alpha n minus 1 beta naught x2, सही है? प्लस बीटा n minus 2 minus alpha n minus 2 beta naught x3 plus 1, है ना? प्लस बीटा 2 minus alpha 2 beta naught into xn minus 1, है ना? प्लस बीटा 1 minus alpha 1 beta naught into x of n, सही है? प्लस बीटा नॉट यू। ठीक लिखा? अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यू हैव गॉट y इक्वल टू, चाहे y लिखो y t लिखो, एक ही बात है। y इज इक्वल टू बीटा n माइनस अल्फा n बीटा नॉट, बीटा n माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 बीटा नॉट, सो ऑन, बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा नॉट और बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा नॉट। ठीक है? और यहाँ पे x1 x2 सो ऑन xn माइनस 1 xn। ठीक है ना? ये बनेगा व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। और आपके एंड में एक और टर्म है बीटा नॉट यू, दैट विल कीप हियर। सही है? दिस बिकम्स द आउटपुट इक्वेशन। ये बन गई हमारी, दिस इज द स्टेट इक्वेशन, और ये बन गया हमारा आउटपुट इक्वेशन। ठीक है? आउटपुट इक्वेशन में आप देखो जो सी वाला मैट्रिक्स है, हमारा इक्वेशन होता है ना y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, सी वाला जो मैट्रिक्स है उसकी टर्म्स बनती हैं किन के कोफिशिएंट से? एक तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से, और उसमें डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी यूज होते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स यूज होते हैं इसमें, दे आर ऑल मल्टीप्लाइड बाय बीटा नॉट, इजंट इट? यू रेफर टू द ट्रांसफर फंक्शन जो हमने ओरिजिनली ली, जिसमें हमने m और n का वैल्यू बराबर लिया, है ना? तो बीटा नॉट जो है वो कौन सी टर्म का कोफिशिएंट है? s टू द पावर n। तो s टू द पावर n वाली टर्म तभी आएगी इसमें जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी, जैसा कि नॉर्मली होता है, उस केस में बीटा नॉट जीरो होगा, इजंट इट? बीटा नॉट जीरो बनेगा, तो कम से कम बीटा नॉट तो जीरो बनेगा। तो बीटा नॉट जब जीरो बनेगा तो ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, ये वाली टर्म। तो वो सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, बीटा n माइनस 1 बीटा 2 बीटा 1, which are actually the coefficients of the numerator polynomial written in reverse order, प्लस d वाला मैट्रिक्स जो है ये वाला y is equal to cx plus du, d वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या है? बीटा नॉट, मीन्स s टू द पावर, वो भी जीरो होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि d वाला मैट्रिक्स तभी आता है आपके स्टेट स्पेस मॉडल में जबकि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। अगर कम होगी तो उस केस में आपका d वाला मैट्रिक्स नहीं आएगा। मेरी बात समझे आप? तो अगर आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन अब दी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि इसको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में रियलाइज करो, तो आपको ये सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। बट इफ somebody tells you just write the state space model, in that case
You have to remember the structure. Means A का structure ऐसा होता है, A में ये जो last वाला row है, it has got the coefficients of the denominator polynomial written in reverse order with minus sign. B वाला जो matrix होगा, it has all the entries 0 except the last one which is unity. और C वाले में, depending upon whether the numerator polynomial degree is equal to or less than the degree of the denominator polynomial, normally it will be less. So उस case में it will be very easy to write. You just have to write the coefficients of the denominator polynomial in reverse order. Are you getting me? और ये जो D वाला भी जो मैट्रिक्स होगा, ये उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जबकि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो. Are you getting me? So this is what is known, what is the first companion form realization of the transform. In the next class, we'll take up the second companion form realization. That's the second canonical form. We'll stop here.